हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? वेलकम टू न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को। आज के व्लॉग में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के व्लॉग में हम ये बात करने वाले हैं, इज़ इट वर्थ इट कमिंग टू द यूके इन 2023? We will also discuss that January intake or February intake is a better session, or September intake is a better session coming to the UK in terms of whether it's earning money, whether it's in terms of study or other things as well. अब देखें, अगर आप तो student visa पे आ रहे हैं in 2023, let's talk about January intake first. It's definitely beneficial in one way, और दूसरा ये है कि it depends on the individual itself. तो अगर तो आप hard working हैं, आपकी requirements क्या हैं, it depends on that as well. आपने obviously जब यहाँ पे आए होंगे, you must have paid off the university some deposit fee. उसके बाद आके आपने कुछ remainder fee pay की होगी, but you still would have maybe half of the fee left or maybe slightly more than that. तो अब depends whether you आपने वो जो remainder fee है वो आपने back home से आपने support मंगवानी है, or you would be intentionally earning it from here within the UK itself. Most likely you would be earning it yourself over here in the UK. ज़्यादा चांसेस में ये होता है कि आप नॉर्मली डिपॉजिट वगैरह किस तरह मैनेज कर लेते हैं, पे ऑफ द अदर फी दैट यू हैव एग्रीड विद द यूनिवर्सिटी वंस यू कम ओवर हियर। बट आके आप नॉर्मली जॉब यहाँ पे सर्च करें, सर्च करते हैं, एंड देन आप कोशिश तो यही होती है कि आप जो है ये फ़ीस यहीं से आप मैनेज करें। लेट्स टॉक अबाउट जनवरी सेशन। क्या फ़ीस एक्चुअली मैनेज की जा सकती है by a student himself? जो रिमाइंडर फ़ी है वो पे ऑफ कर सकता है या नहीं? फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, गुड न्यूज़ इज़ ये आप और आपकी यूनिवर्सिटी के दरमियान का अरेंजमेंट है, बट मेजोरिटी 99% ऑफ द यूके यूनिवर्सिटीज़ दे अलाउ यू to pay the remainder fee in installments. So I have supported my wife for her PhD studies in the UK for 5 years. So मेरी यूनिवर्सिटी के साथ काफ़ी इंट्रैक्शन होती थी in regards to that. तो मैं normally 4-5 installments में जो है ना साल की पे ऑफ करता था. So it doesn't come up as a one big burden on me कि मैंने 18,000 पाउंड साल का एक साथ पे करना है या समथिंग लाइक दैट. आई यूज़ टू ब्रेक इट अप इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स, ताकि मैं कुछ इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो एवरी क्वार्टरली या कुछ इस तरह से है ना मैं पे कर सकूं. बट वट एवर योर रिक्वायरमेंट इज़, जो भी आपने कमिटमेंट यूनिवर्सिटी के साथ करें, कोशिश करें उसे फुलफ़िल करें, सो दैट इन केस यू नीड एनी फर्दर असिस्टेंस फ्रॉम देम इन द फ्यूचर दे विल नॉर्मली हेल्प यू आउट. एक तो अच्छी चीज़ ये है जनवरी इनटेक के हवाले से कि आपका जो टर्म टाइम होता है, फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट कि आप स्टूडेंट को 20 आवर्स अ वीक अलाउ होता है पेड वर्क. द मिनिमम वेज फॉर अ स्टूडेंट इन द UK is about £10 something per hour now, which has increased quite a lot, क्योंकि जब मैं आया था long time back उस वक्त £5 something था. So it's almost double now. So in that way obviously they can easily earn about 700 something per month, or while they are studying at the university. So term time जिसे कहते हैं. One other thing is that जब आपका टर्म टाइम ना हो, दैट मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम योर स्टडीज़ इन योर ब्रेक टाइम इन हॉलीडेज़, आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है. दैट इज़ द मेन टाइम जहाँ पे स्टूडेंट्स यूटिलाइज़ करते हैं उस टाइम को कि दे वर्क फुल टाइम, एंड उस फुल टाइम में दे अर्न अ लॉट इन ऑर्डर, एंड फ्रॉम वहाँ से वो कोशिश करते हैं कि अपनी फ़ी जो रिमाइंडर है वहाँ से सेव की जाए. नाउ अगर मैं जनवरी इनटेक को कंपेयर करूं सितंबर इनटेक के साथ, तो उसका एक बेनिफिट जनवरी इनटेक का ये है कि आपको जो है वो ठीक ठाक समर में जो है ना 3.5 मंथ्स की तकरीबन गैप मिल जाता है ड्यूरिंग टर्म्स. तो वो मोर देन इनफ होता है कि स्टूडेंट जो है वो फुल टाइम काम कर रहे होते हैं, एक दो जॉब पकड़ी होती हैं, एंड देन दे कैन सेव मेजॉरिटी ऑफ द फी बिटवीन दैट टाइम. सितंबर इनटेक का सिर्फ ये चीज़ फ्लो है कि उसमें प्रीटी मच आपकी एक टर्म ख़त्म हुई, आपको क्रिसमस टाइम की ब्रेक आई, जनवरी की अर्ली न्यू ईयर की कुछ चंद हॉलीडेज़ आएंगे, देन सून आपका नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाती है. यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम इन बिटवीन जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा इन ऑर्डर टू वर्क फुल टाइम, जो कि आई थिंक इट्स अ रियलिस्टिक सिनेरियो. उसमें जो है कंपेयर टू जनवरी इनटेक फ़ीस जमा करना अ बिट मुश्किल है फॉर अ स्टूडेंट. नाउ
there are a couple of other things. First thing is that आप अपने ओन पे आ रहे हैं, आप एज अ कपल आ रहे हैं. अगर तो आप अपने ओन पे आ रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन अदर थिंग, कॉस्ट एक्सपेंसिव दैट माइट बी इन्वॉल्व्ड एज वेल. आपके लिविंग एक्सपेंसेस बहुत डिपेंड करते हैं, आपका लिविंग लाइफस्टाइल क्या है. अगर तो लेट्स से आप बात कर ली जाए स्टूडेंट अकोमोडेशन की, तो नॉर्मली स्टूडेंट जो है यहाँ पे रूम शेयर करते हैं. कुछ स्टूडेंट्स इफ़ दे आर अर्निंग वेल और इफ़ दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड बैक होम, उन्हें पीछे से सपोर्ट है, देन दे नॉर्मली जस्ट रेंट द रूम फॉर देमसेल्व्स अलोन. बट नॉर्मली आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स रूम शेयर करते हुए मिलेंगे. व्हाट दैट मीन्स इज़ कि आपको नॉर्मली टिपिकल रूम विद इन अ हाउस होल्ड मिल जाएगा, लेट्स से फॉर रेंटल 400 to 600 pounds, depending on where your university is, but that is normally what you will find in London. तो अगर लेट्स से अगर 2 स्टूडेंट्स आपस में शेयर कर रहे हैं, 400 पर रूम है, तो उन्हें 200 पर मंथ जो है वो रूम की कॉस्ट आएगी. और 250 अ मंथ कह लें, अगर 500 का पर मंथ रूम की कॉस्ट है, विच विल इंक्लूड ऑल योर यूटिलिटी बिल्स. तो आपको कोई बिजली, गैस, पानी, उसका कोई बिल आपको नहीं पे ऑफ करना. एवरीथिंग इज इंक्लूसिव. There is a shared kitchen within the household itself. आप वो utilize कर सकते हैं. Laundry, everything is within the household itself. So you don't need to encounter any extra cost. बाकी obviously it depends. एक चीज़ तो sideways ये है कि आपको obviously शायद आपने back home ना किया हो, because mostly our sisters or our mothers cook back home. But यहाँ पे आप कि आपको खाना वगैरह भी बनाना पड़ेगा, या आपको सीखना पड़ेगा. सो इट डिपेंड्स. इफ़ यू ईट अ लॉट फ्रॉम आउटसाइड, ऑब्वियसली दैट इज़ एडिशनल कॉस्ट फॉर यू on your pocket. So मगर अगर आप घर पे बनाते हैं, obviously it will last for few days, and ये है कि obviously you can save. So every penny will definitely, and it counts in regards to that as well. ट्रैवल कॉस्ट आ जाए. ट्रैवल कॉस्ट थिंग इज़ ट्रैवल इतनी नहीं पड़ती. डिपेंड्स हाउ फार यू आर फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी. दो ही चीज़ों की ट्रैवल आपको चाहिए होगी कि आपने हाउ यू हैव टू कम्यूट टू योर यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, और सेकेंडली हाउ विल यू कम्यूट टू योर वर्क प्लेस. अगर तो दोनों ही पास हैं तो मोस्ट लाइकली यू माइट टेक अ बस पास, मंथली पास. shouldn't cost you too much, so hopefully you can save on that as well. अगर तो आप एज अ कपल आ रहे हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल है. आप अगर यंग कपल है, यू हैवंट गॉट एनी चिल्ड्रन, दैट वुड बेनिफिट यू वेरी वेल, बिकॉज द थिंग इज़ दैट लेट्स से अगर आप अपनी वाइफ को एज अ स्टडी के लिए भेजते हैं फॉर अ मास्टर्स डिग्री और PhD डिग्री, तो मास्टर्स की बात कर ली जाए लेट्स से, तो आप एज ए उनके स्टूडेंट डिपेंडेंट यहाँ पे आते हैं, एंड एज ए स्टूडेंट डिपेंडेंट आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है. व्हाट दैट मीन्स इज देयर वुडंट बी एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिपेंडेंट हाउ मेनी आवर्स वो काम कर सके, अ वीक और अ मंथ और एनीथिंग लाइक दैट, व्हाट टाइप ऑफ जॉब ही कैन डू. हाँ, स्पोर्ट्समैन वगैरह आप नहीं बन सकते, यू कैन डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट. सो उसमें ये होता है कि इफ़ वन इज़ अ प्रोफेशनल, आप कोई भी प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो, whether it's IT related, whether it's an engineer, whether it's a doctor, whether it's in any good field, in your own speciality, जिस एरिया में आप एक्सपर्ट हैं, आपका जॉब एक्सपीरियंस पास्ट में रहा है, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, wherever you are from, तो बेस्ट सिनेरियो तो ये है अगर आप एज अ कपल आते हैं, वन पर्सन डज अ फुल टाइम जॉब, आपकी आराम से प्रोफेशनल जॉब, मिनिमम जो आपको स्टार्टिंग वेज यहाँ पे मिल जाती है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस भी ना हो तो 20-25K तो कहीं भी नहीं गई, बट यू कैन ईजली अर्न 40K, 50K, 60K डिपेंडेंट ऑन योर एक्सपीरियंस विच इज़ पर ईयर. तो उसमें अगर आपकी 18,000 साल की फ़ीस भी है, यू कैन ईजली मैनेज दैट. सो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने लगी. सो ऊपर से ऑब्वियसली डिपेंड करता है, अगर आप कपल हैं, आपने स्टूडियो फ्लैट लेना है, आपने वन बेड फ्लैट अपार्टमेंट लेना है, और if you still decide to go for one bedroom rental only, you will save a lot, because thing is, as I mentioned earlier, one bedroom में ये है कि आपकी सिर्फ everything is included, your utility bills are included, your washing, आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है. Whereas on in a private property itself, अगर आप स्टूडियो भी रेंट कर रहे हैं और you're renting a one bed property, उसमें एडिशनल कॉस्ट आपकी आएगी. काउंसिल टैक्स भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, £100, £80, £120, depending on how big the property is. आपको यूटिलिटी बिल्स भी काफ़ी पे करने पड़ेंगे,
जो कि बहुत हाई प्राइसेस चली गई हैं कंपेयर टू व्हाट इट वाज एन ईयर अगो। उसके बाद वाटर बिल्स भी हैं, उसके बाद आपको और बहुत सी मेंटेनेंस साइडवेज चीज़ें हैं, डिपेंड्स ऑन सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स, यू हैव टू बाय होम इंश्योरेंस एज वेल। वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आपके जो एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे। सो इफ़ यू कैन रेंट अ रूम, if you're a couple itself, that's even more better. You will save a lot. So manage karna fees, it's not impossible, it's easily possible if you're a couple, फिर तो कोई problem ही नहीं है। But even if you're an individual, अगर आप अकेले भी आ रहे हैं, still you can manage it. But at the end of the day, it depends on your lifestyle. अगर आप बहुत ज़्यादा outgoing हैं, depending on your monthly requirements itself, आप expenditures कहाँ कर रहे हैं, so it really depends on the individual itself. Apart from that, no, I would say that January intake is definitely a better session than the September intake because of these few reasons. Apart from that, in terms of weather, obviously January intake and February intake में weather थोड़ा it would be a more chilled, थोड़ा ठंडा होगा. So that's another thing. अपने साथ गर्म कपड़े लेके आएं and keep yourself warm because the last thing you want is to get sick. अगर आप sick होंगे, you can't go to work, you can't earn, you can't save fee for your studies and you can't attend your classes as well because आपको यहाँ पे अपनी attendance भी यूनिवर्सिटी की मॉनिटर करनी होती है. Most of the universities for a master program ask you to come 3 days a week. Studies इतनी मुश्किल नहीं है. अगर स्टडीज़ की बात की जाए, अगर तो आप अपने एरिया फील्ड ऑफ स्टडी, अपने आप की एक्सपर्टीज़ जिसमें है या अपने पीछे बैचलर्स जिसमें किया हुआ है, अगर आप उससे रिलेटेड कोई मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, फिर तो इतना इशू नहीं है. यू कैन ईजिली मैनेज दी स्टडीज़. नॉर्मली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आप सीन ओवर हियर इज स्लाइड बेस्ड सिस्टम है. सो यू जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स एंड स्टाफ. बहुत ही मिनिमल चांसेस हैं कि इधर उधर कहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएं, बट यू नेवर नो. बट इट्स इफ़ यू हैव डन स्टडीज़ इन पाकिस्तान, इंडिया एंड आवर कंट्रीज बैक होम, आपको यहाँ पे स्टडी इतनी मुश्किल नहीं लगेगी. बट ऑब्वियसली इफ़ यू कंप्लीटली डूइंग अ न्यू डिग्री, अ न्यू एरिया यू स्टडिंग इन, जो आपने पीछे उसमें स्टडी नहीं किया हुआ, देन ऑब्वियसली इट माइट बी अ बिट ऑफ चैलेंज. तो आपको स्टडी में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. माई ओन एक्सपीरियंस वॉज दैट कि आई यूज्ड टू, व्हेन आई वाज स्टडिंग, आई वाज डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब. अनफॉर्चुनेटली बेस्ट सिनेरियो तो ये होता है कि आप वीकेंड पे जॉब कर लें, सैटरडे संडे, और आप मंडे टू फ्राइडे आप स्टडीज़ को निपटा लें, चाहे वो आपकी असाइनमेंट्स हैं या जो भी हैं बाकी कुछ वगैरह. बट इन माई सिनेरियो वाज दैट आई वाज डूइंग अ पार्ट टाइम काइंड ऑफ 20 आवर्स मेरे इस तरह थे कि आई हैड टू वर्क 4 आवर्स एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे इंस्टेड ऑफ वीकेंड. सो एज सून एज आई यूज टू टेक अ क्लास, मैं उसके बाद हमारी लैब भी होती थी प्रैक्टिकल, वो मैं हाफ लेता था, हाफ स्किप कर देता था बिकॉज इट वाज अबाउट एन आवर एंड अ हाफ जर्नी ऑन द बस एंड ट्रेन, और मुझे जॉब लोकेशन पे पहुंचना होता था इन ऑर्डर टू स्टार्ट 6:30 in the evening, so which was at times a bit difficult, so but it can be manageable. चलें इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें. और कुछ सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप काइंडली प्रोसेस बताएं हाउ वी कैन अप्लाई फॉर अ PhD डिग्री एज वेल. तो मैं आपके साथ शोली ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगा. इट विल बी कमिंग वेरी सून. सॉरी फॉर द डिले ऑन दिस. इंशाल्लाह वो वीडियो जल्द आ रही है. आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप what's the process in order to apply for a PhD degree, how long it will last, and one आपको extra tip दे लूँ. You might have heard that master's degree के बाद 2 साल का PSW मिलता है. But let me tell you, if you do a PhD degree, you get 1 year extra PSW. So अगर आपने master किया, you will get 2 years PSW. You will do a PhD degree, 4 to 5 years it might last. You will get 1 extra year of work permit after your PhD degree as well. So इस बात पे भी, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे बाद में. So इंशाल्लाह मिलते हैं. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.